Hello, my name is Dr. Harish, and we are back with another treatment protocol. We have Keshav Swami with us. It's a very interesting case. Not interesting is very typical case as well because typical. Why I'm saying the typical? Because the case related to the C1 vertebra. The C1 vertebra is a very initial vertebra of the spine actually, and everything is connected with the C1 vertebra. You can say because there is a tunnel of the spinal cord in which the whole spinal cord goes down till the tailbone. Okay, and the C1 vertebra act as a barrier. All right. Okay, it helps to rotate your head upside down, sideways. So before we are moving ahead, let's talk about the symptoms of the case of Swami. He used to feel earlier. He used to bear a lot physical and mental panic. So Keshav Swami, can you tell us about this? How painful it was, and how was the journey of your the whole protocol? पहले ही जब मेरे को हुआ ये तो मैंने बस जस्ट की बैक पे ट्राई की थी. सो आई जस्ट मूव माई नेक लाइक दिस. Okay, okay. तो इसके बाद से मैंने नोटिस नहीं किया क्या हुआ. तो आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग अगेन एंड डांसिंग. तो उसके बाद से मैं जब भी ऊपर देखता मैं चक्कर आने वाली फीलिंग आती थी मेरे को, गिरने वाली. लाइक कि ऐसे करो और ये हिल जाता था मैं. Okay. तो आई थॉट कि कुछ लाइक कोई नस में होगा या ब्रेन में कुछ, आई थिंक ट्यूमर व्यूमर तो नहीं हो गया कहीं पे. मैंने इसे कैजुअल लिया. लेकिन आफ्टर दैट जब ऑफिस में काम कर जब नीचे देखने लगा तब भी मेरे को फीलिंग आने लगी. और फिर शार्प पॉइंट्स पेन, मतलब पेन ओवर द हेड होने लगे मेरे को. जब भी मैं ऐसे मूव करता हूँ मेरे को बहुत तेजी से यहाँ पेन हो रहा है. तो आई थॉट कि कहीं ब्रेन में सच में कुछ ना हो गया हो. तो मैंने ब्रेन का MRI कराया था. तो उसमें कुछ निकला नहीं. तो आई थॉट कि ब्रेन में ही तो शायद कुछ ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हुआ होगा, केमिकल. बट फिर उसके बाद जैसे ही मैं खेलने लगा तो मैं गिर गया था एक बार. मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने आप को कॉन्स्टेंट. तो फिर मैंने MRI कराया स्पाइन का. तब मेरे को पता चला कि मेरे को एक सबलक्सेशन हुआ, राइट, जो कि उन्होंने बोला कि C1 C2 पे हुआ है मेरे को. ऑलराइट. सो जिस तरीके का टिपिकल सिम्टम्स बता रहे हैं उनको वीप्लेस इंजरी बोलते हैं हम टेक्निकली इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. और ये एक्सिस और एटलस बोन के बीच में होता है स्पेस. इसको ADI एंगल बोलते हैं. ठीक है. सो लेट मी शो यू एक्सरे ऑफ ADI एंगल. ADI is a Atlanto dental interspace. Just look at the space. Can you see that space, the blackish space? Okay, it's supposed to be look like this, but if you can see, this is the right side. This is very mildly reduced here. All right, can you compare the both space? All right, let me show you one more thing. Okay, if you look at the angle of the both teeth, this is the teeth, it's supposed to be parallel, but you can see there's a big difference. Again, on the lower side, lower jaw, you can see the difference. So the whole jaw tilted to the sideways. He never noticed this. So you can see we have lots of report around. He have seen to many doctor. All right. So जैसे हमने ट्रीटमेंट कर दिया इसका, इसके बाद कितना परसेंट सिस्टम जो आपके सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो चुके थे? और ट्रीटमेंट के बाद मेरे को अराउंड 90-95% मेरे को रिलीफ है. सिम्टम नहीं है. सो आई कैन प्लेइंग बैडमिंटन एंड क्रिकेट राइट नाउ. यू आर डूइंग एवरीथिंग. या आई एम डूइंग एवरीथिंग. जो पीछे आपको फीलिंग आ रही थी वो अभी डिजीनेस नहीं की, है. अभी नहीं है. Dizziness- हाथ में जैसे आपने बताया था मुझे कि इसमें बहुत सारा पेन जा रहा है इसमें. वो फिंगर्स में जो पेन होता है शार्प पे वो अभी नहीं है. और पीछे साइड में और डाउन में नहीं है मेरे को भी. वो डिजीनेस वाली फीलिंग नहीं है अभी. सो ऑलमोस्ट 90-95% मेरे को. Okay. So let me show you guys what is the anatomy behind this particular case. So I just took the spine. Just look at the spine. Can you see this particular yellow things? These are the nerves. It splices with the various part. All right. So everything started from this brain, and this is the C1 vertebra. All right. And this is the main spinal cord, which goes beneath this C1 vertebra. So this C1 vertebra in his Swami's case is little tilted. So it start compressing the spinal cord over there. So he used to get lots of symptoms and lots of silent symptoms, because if someone get compress his main spinal cord, you can see the lots of things can be happen. So let's move ahead. The main
Atlanto axial subluxation correction has been done already. So today I'm going to do a very gentle correction, which is a follow-up correction. So I'm not going to do the ADI angle manipulation. So I'm going to do below the C2 vertebra to C7 vertebra, which is a manipulations of the cervical spine to open up the joint basically, and to leave the blood flow. Lie down. So you can see he got a full range of motion of the head, side to side, rotations. Are you feeling any symptom related to this? No. कोई हाथ में पेन आ रहा है, बॉडी में कोई पेन जा रहा है, चक्कर आ रहा है आपको? ऑलराइट, पीछे करके देखते हैं, इसमें कोई चक्कर आ रहा है आपको? ऑलराइट, so you can see almost 95% symptom has been released, but there is still residual tightness over the neck. So I am going to release this tightness only. Take a breathe in, out. Take a breathe in, out. Alright, sit down please. Take a breathe in, out. So there is no tightness right now. Muscle has been loosened up, and he gets the full range of motion without any symptoms, and sitting as well as in the lying down. Alright, thank you. Just subscribe our channel. We'll keep updating you with the more videos.